Hey everyone, my name is Sankalp and you're watching Chasing Whereabouts. Finally, I was able to make this happen. मैं इस समय हूँ फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे और मैं जा रहा हूँ इस एथेंस. वन डाउनसाइड विच हैपेंड वाज कि मेरी जो फ्लाइट थी एथेंस की वो कल की थी, बट ड्यू टू सम स्ट्राइक एट एथेंस एयरपोर्ट वो फ्लाइट कैंसिल हो गई एंड अब मैं जा रहा हूँ आज एथेंस. So in case if you're wondering how safe it is to travel via flight during this time, this video is going to cover all my experiences which I will be going through while boarding the flight. So मैं try करूँगा कि मैं सारे जितना वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ इन सब एरियाज़ का उतना रिकॉर्ड कर दूँ और I'll share the live experience around this particular trip. What changes which I experienced while boarding a flight and within a flight. Smooth and easy, that's what I can say about the security check. It just took me around 5 to 7 minutes to cross the security check और currently मैं बैठा हूँ फूड जोन में, so that's why मैं मास्क हटा सकता था. And next is the border control जहाँ पे मेरे को इमिग्रेशन चेक करना पड़ेगा बिकॉज मैं जा रहा हूँ जर्मनी से बाहर to a new country that is Greece. So let's see how much time it's going to take over there and see you after that. Okay. So this came as a new information for me. जो मैंने बोला था कि बॉर्डर कंट्रोल है और मेरे को सिंस मैं फ्रैंकफर्ट से ग्रीस जा रहा हूँ तो मेरे को बॉर्डर कंट्रोल के थ्रू गुजरना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है. सीम्स लाइक जस्ट अगर आप ट्रैवल कर रहे हो शेंजन एरिया के अंदर तो देयर इज़ नो बॉर्डर कंट्रोल. मेरे को वे आउट मिला, डायरेक्टली बोर्डिंग गेट तक मैं पहुँच गया एंड आई वाज राइट इन फ्रंट ऑफ द बोर्डिंग गेट. सो all the time which it took was just for the security check, hardly 7 minutes और मैं अंदर था. So the next experience which I'll be sharing is after I board the flight. This is going to be my first Ryanair flight, so let's see how it's going to be. तो बज रहे हैं इस समय 11:45 और मेरी फ़्लाइट जो है वो है 1 बजे की दोपहर में. तो मैंने थोड़ी बहुत कॉफ़ी पी है एंड अभी मैं वेटिंग एरिया में बैठा हुआ हूँ एंड दिस इज़ द परफेक्ट टाइम व्हेन आई कैन टॉक विथ यू ऑल. Here are a couple of things which you need to know while traveling during this time of pandemic. Normally क्या हो रहा है कि हर गवर्नमेंट जो है वो आपका डेटा ट्रैक कर रही है in order to identify in case अगर कुछ unforeseen circumstances आ जाती है या फिर आपको God forbid कोरोना हो जाता है तो they can identify where you are staying. This is the particular thing which is all the government throughout the world is doing. So in case in our case since I'm going to Greece में भी यही सेम चीज़ हो रही है. उनका एक फॉर्म है जो है PLF पैसेंजर लोकेटर फॉर्म जो कि आपको 24 आवर बिफोर द डिपार्चर भरना रहता है. तो इन केस अगर आप कल ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एक दिन पहले ही कल के लिए बुक करना पड़ेगा कि यू आर coming to Greece and this is the medium by which you are coming. You have to tell the last 14 days location कहाँ आप स्टे किए थे before entering Greece and also आगे ग्रीस में आपका क्या क्या प्लान है और आप कहाँ कहाँ स्टे करने वाले हो उसकी लोकेशन आप वहाँ पे डालते हो. नॉर्मली ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है वो पर फैमिली एक ही बंदे को सबमिट करना है. दैट्स द केस. And once you have submitted the form, right before the day of departure, midnight में 12 o'clock आपको एक QR code मिलता है which you can take either in a PDF format or you can even print out. That particular form is very much important for entering into Greece. बिना उसके आपको ग्रीस में एंटर नहीं करने देते हैं. इन केस अगर आपके पास वो जो फॉर्म का QR कोड है नहीं आता है एंड यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड द फॉर्म देन आपको डिपार्चर से कोई नहीं रोकेगा क्योंकि वो उसमें लिखा हुआ है कि यू कैन जस्ट शो दैट यू हैव सबमिटेड द फॉर्म विथ ऑल द डिटेल्स. यू विल बी एबल टू बोर्ड द फ्लाइट.
that's about PLF related Greece. There is another form as well, which is for Frankfurt, that is for German government, जो कि एक फॉर्म है जो मेरे को भरना है when I'm returning from Greece to Frankfurt. तो दैट वो फॉर्म मैंने अभी तक भरा नहीं है, तो आई कैन नॉट लेट यू नो कि what all things are required in that, बट मोटा मोटी वही रहेगा जो ग्रीस के लिए है. And the other important thing is if you're planning to travel in between the Shenzhen area, then EU Reopen करके एक वेबसाइट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस समय आपके ट्रैवल प्लान्स को लाइट दिखाने के लिए, बिकॉज बेसिकली आप कहीं भी जा सकते हो. जो भी इंफॉर्मेशन है दैट वेदर यू कैन एंटर दैट पर्टिकुलर एरिया और वेदर यू कैन ट्रैवल बैक टू योर पर्टिकुलर होम कंट्री एंड रेसिडेंट कंट्री और नॉट, everything is there present on EU Reopen. तो basically ग्रीस में मैं गया था, बिफोर प्लानिंग दिस ट्रिप आउट मैंने क्या किया था, EU Reopen पे गया था और मैंने चेक किया था कि वेदर ग्रीस इज़ वेलकमिंग ट्रैवलर्स और नॉट, बिकॉज दिस इज़ जस्ट लेजर ट्रैवल, नॉन एसेंशियल कैटेगरी में आता है ये. तो मैंने देखा दे आर वेलकमिंग ट्रैवलर्स फ्रॉम शेंजन एरिया, तो इसका कोई इशू नहीं हुआ था. एंड बेसिकली उसमें थोड़ी वर्ड्स या कंट्रीज़ का नाम पड़ा हुआ है जिनके लिए आपको कोरोना का टेस्ट कराना ज़रूरी है बिफोर एंटरिंग. बट फॉर मी एंड आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम जर्मनी, तो मेरे लिए कोई टेस्ट कराना ज़रूरी नहीं था. So that's an important information which you can find out in case if you want to travel in between the Shenzhen area countries. मेरी सीट नंबर है 28E. मैं पीछे से बोर्ड करने वाला हूँ. तो मैं पहुंच गया हूँ एथेंस में एंड हियर आर कपल ऑफ द इंफॉर्मेशन विच आई वांट टू शेयर विथ यू ऑल. जब मैं बोर्डिंग करने के लिए गया था जर्मनी में, तो मेरा PLF फॉर्म का जो बारकोड है वो उन्होंने चेक किया था और एक स्लिप पकड़ाई थी. एंड देन उस स्लिप को मैं बोर्डिंग करते समय उन्होंने कलेक्ट कर लिया था वापस के लिए. एंड देन आई जस्ट बोर्डेड द फ्लाइट, जो कि मैंने कवर किया था इन अ वीडियो. एंड जब मैं एथेंस में पहुंचा तो एंट्री पॉइंट पे उन्होंने बोला अपना QR कोड रेडी रखिए, एंड देन उसको स्कैन किया एंड देन जाने दिया बस. बट हाउ वाज द एक्सपीरियंस इन द फ्लाइट? इट वॉज प्रीटी मच नॉर्मल. जैसे मैं फ्लिक्स बस लेके गया था बर्लिन या फिर म्यूनिक, इट वॉज दैट सब लोग अपना मास्क लगा के बैठे हुए थे. सो सेम सिचुएशन थी फ्लाइट में भी, सब लोग अपना अपना मास्क लगा के बैठे हुए थे एंड नथिंग एल्स वॉज चेंज. इट वॉज अ नॉर्मल फ्लाइट. हम लोग उड़े, सही टाइम पे पहुंच गए, कोई इशू ही नहीं हुआ. एयरपोर्ट पर भी प्रीटी मच कैजुअल, ऐसा कुछ नहीं, बस यही चेंजेस है. कुछ दूर पे आपको सैनिटाइजर मिल जाएंगे लगाने के लिए, आप सैनिटाइज कर लो अपना हाथ, बट नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट. दिस इज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर व्लॉग एंड प्रीटी मच दैट्स इट about how safe it is to travel during COVID. In case if you want to know something more about the in-flight stuff and how was my experience, you can drop your questions in the comment box below. Don't forget to like and subscribe to our channel and see you next time. Bye. Thank you for watching our video. Subscribe for more. Drop your reviews in comment box below. See you next time. Bye.